Good morning, students. Today we will start lesson number 3, population, distribution, density and growth. Population, distribution, density and growth. First of all, what is population? The number of person in the particular region is called the population. The number of person in particular region, male and female also included in it. So here the पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? द नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि लोगों की संख्या. ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करेंगे. तो लोगों की संख्या, दैट इज कॉल्ड population. The number of person in particular region is called the population. Next, population distribution. Here the main emphasis given special distribution in distribution, specific distribution, all these, and density, the ratio between the population and the land, and growth, the changing in the population in particular region in the particular time, that is called the population growth. In this lesson we study about the population distribution, then population density, then population growth. Now here we start the lesson from the point man a resource. What man a resource? First of all, what is resources? So all these things which complete the human necessities, all these activities, all these things, all these objects complete the human necessities, fulfill the human requirement, that is called the resources. जो human की requirement, जो जरूरतें हैं उन्हें जो complete करता है, that is called the resources. Like land, soil, water, air, all these are like this marker, mobile phone, board, all these things complete the human necessity, that is called the resources. Like here, this is big stone, this big stone, what this big stone complete the human necessity? No, but human cut या डिवाइड इन द शॉर्ट स्टोन, इन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेता है, और फिर छोटे छोटे टुकड़े क्या आएंगे ना, काम आएंगे. ठीक है, जैसे बड़ा है द ह्यूज स्टोन, इट इज नॉट द रिसोर्स, बट ह्यूमन क्या कर रहा है, इसे टेक्नोलॉजी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा है और इसे अपने जो नेसेसिटी उसको कंप्लीट करने के लिए यूज में ले रहा है. फिर ये क्या बन जाएगा, स्टोन. इसका जब टुकड़े हो रहे हैं बन जाता है क्या, रिसोर्स. तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज ऑब्जेक्ट कंप्लीट द ह्यूमन नेसेसिटी, दैट इज कॉल्ड द resources. Here the question, what human या man is a resource? What? Man is a resource? Yes, man is a resource. कैसे द लाइक here the जैसे मैं टीचिंग करवा रहा हूँ आपके, तो I complete your necessity, मैं तुम्हारी necessity complete कर रहा हूँ टीचिंग से रिलेटेड. When डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कंप्लीट योर नेसेसिटीज, लॉयर कंप्लीट योर नेसेसिटीज, वन ह्यूमन कंप्लीट द अदर ह्यूमन नेसेसिटी. जैसे फार्मर आपके लिए ग्रू हियर द, देन कंप्लीट द नेसेसिटी, वी हैव ऑल वेजिटेबल्स एंड द फूड ग्रेन्स प्रोवाइड द फार्मर्स फॉर अस. देन फार्मर इज आल्सो रिसोर्स फॉर us. तो वन ह्यूमन कंप्लीट द अदर ह्यूमन नेसेसिटीज. सो ह्यूमन इज ए रिसोर्स. एक ह्यूमन मैन क्या कर रहा है, दूसरे ह्यूमन की नेसेसिटी को कंप्लीट करता है, इसलिए ह्यूमन भी क्या हो गया, हमने देखा कि ह्यूमन नेसेसिटी कंप्लीट कर रहा है वो क्या है ना, रिसोर्स. तो यहाँ पे मैन भी क्या कर रहा है, अदर मैन की नेसेसिटी कंप्लीट कर रहा है, तो दैट इज ह्यूमन या मैन इज ए रिसोर्स कंप्लीट. ठीक है, मैन भी क्या है, रिसोर्स है, बिकॉज ह्यूमन कंप्लीट द नेसेसिटीज, या ह्यूमन help each other and complete their necessity, that is human is a resource. Next, here in this lesson, population distribution. Here the general introduction about the population distribution. The basic important factor for the analytical study of population. Population distribution is the basic important factor for the analytical study of the population. When we want the analytic study of the population, then we use the population distribution. And in population distribution, special distribution is highly emphasized. इसमें क्या है ना, ये ratio between the land and the population, that is population density. But population distribution में क्या कहता है, special distribution is highly emphasized. In population distribution,
study about the spatial distribution. And in the world, population distribution found uneven. Population distribution found in uneven. Some regions they have, some regions like here, this region A, this region B, 100 square kilometer, also 100 square kilometer, but in this region only 100%. In this region here 1000%. Or here the land part is big, but here the population is low. Here the land part according to land part, same land part, but here the population is high, because here the human, like here the soil, water resources, plain regions, ठीक है, is found in this region. Here there is favorable condition for the human beings, though here the population dense found here, and this part here not favorable condition for the human being. Then here the low condition, here low population found here. So totally we at last we can say a population distribution found uneven in the world, uneven in the world.